or a incineration plant or finally towards the composting. So I am now going to start my presentation. Okay, sir. Okay. Good morning, sir. My slides are visible to all of you. आप लोगों को slides दिख रही हैं मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Thank you. So to start with the solid waste management, we all know as a society we need certain things. As a product, कोई सामान चाहिए हम लोगों को, और उस सामान को बनाने के लिए या तो एनर्जी लगेगी या फिर रॉ मटेरियल चाहिए. So we need an energy or a raw material as a society, and after utilizing that product that is made up of energy and some raw material, we are going to generate certain amount of waste, and that waste can be in the form of solid waste, liquid waste, or gaseous waste. So there are different type of waste that is coming out from the our household or industries. So that come under the category of liquid waste, जिसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं, और या फिर सॉलिड वेस्ट जो हमारे इंडस्ट्रीज से या घरों से भी निकलता है. दूसरा, कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है तो उसमें सॉलिड वेस्ट कुछ बर्निंग होती है, कुछ फ्यूल बर्न किया जाता है प्रोसेस के दौरान. दैट आल्सो नीड सर्टेन कंजम्पशन ऑफ अ फ्यूल, so we are generating gaseous. So whenever as a society use such product, we are generating byproducts that is in the form of solid waste, liquid waste, or gaseous waste. So in this part, I will be discussing about the solid waste. So what is solid waste? Basically, solid waste is a useless, unwanted, or a discarded material. And in this course, I will be discussing mostly about the solid waste that is generated from our household. जो हमारे घरों से solid waste निकलता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ. So that unwanted discarded material resulting from agriculture, commercial, communal, and industrial activity. In our cases, it can be a garbage, some street waste, some food waste, cardboards, plastics. That can also be a part of a solid waste. So anything which is generated from our household in the form of solid, whether a plastic, cardboard, food waste, garden waste, kitchen waste, they all come under the category of municipal solid waste that is coming from our house. So earlier, generation of a solid waste around the world for a long time, it is a major problem around the world. So there are 4 basic means associated with the main disposal, जो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि उसके बारे में. या तो सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है किसी फील्ड में, और या फिर उसे बर्न कर दिया जाता है, or it either it go for a recycling. Some of the material can be recycled. There can also be a waste minimization, कि हम इस्तेमाल ही कम करें, solid waste का generation ही कम हो. So basic 4 things can be done in the case of solid waste management. It can be either a dumping, it can be either a burning, जला दिया जाए, या फिर recycling की जाए कुछ material की, जैसे कार्डबोर्ड हैं, प्लास्टिक हैं, they can be recycled. तो वी हैव अ वेस्ट मिनिमाइजेशन, जो हम कम से कम इस्तेमाल करें तो चीजें भी कम से कम वेस्ट होंगी. बट फर्स्ट 2 पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डंपिंग एंड बर्निंग. मोस्टली हमारे घर के आसपास जो डंपिंग साइट्स हैं, दे आर नॉट इंजीनियर्ड वे ऑफ डंपिंग द वेस्ट, यानी वो कायदे का तरीका नहीं है कि हम उसे डंप करें सॉलिड वेस्ट. So that's why we need some technique for proper dumping, and proper dumping we call it as landfilling or sanitary landfills or engineered landfills. Burning is also not a proper way, because in that case, if you are open burning, you are releasing lots of gases that are very harmful to human beings. So this is a common site for a dumping. So this is not a proper way of, or what we call as not a proper way of managing the solid waste. So this is a common site हमारे घर के आसपास या कहीं शहर के बाहर. This is the common site. You can see that lots of dumping is being carried out in the form of solid, because the generation is so huge. That's why we need certain way. That's why we are just directly dumping the solid waste. And in the very first, I want to tell you that around it is estimated that each and every person around releases around 0.5 kilogram of
solid waste per day per person. The generation of solid waste per person per day is around 0.5 kilograms per person per day. And it also depends upon the type of city they are living, type of locality. The slides are not moving, sir. Flights are not moving. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Uh, Sir, presentation mode में रखिए, sir. okay. Now it's moving. Yes, Ah, sir. Yes, sir. Moving, sir. Yes, sir. I will share in this slide. It is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So in this you can see there are a lot of dumping. This is which is a very common sight. And then we have a burning of a solid waste. If we are doing a open burning, it is also creating lots of problems. For example, if you are burning in a solid waste in an incomplete way, there are different types of gases that release in an environment. For example, dioxins, pheromones, they are very toxic in nature. They are sometimes carcinogenic in nature, and they are very difficult to track because we don't have any instrument to track these type of gases. So that's why we say that dumping in an open or without proper planning is not recommended. Burning of a solid waste is also not recommended in an open way. But in this course, I will be discussing how we are going to dump the solid waste, what should be the method, and how we should burn the solid waste in a closed chamber. And the third part is recycling. That is a very good thing. We can recycle many things like plastic bottles, cardboard, plastic, paper. So this is, but you can't recycle each and every part of the solid. So we have dumping, we have a burning of a solid waste, then we have a recycling. Then we have a waste minimization hierarchy in which says that prevention should be done, and but it should be a most favored portion. सबसे ज़्यादा उसी को favor करना चाहिए. But it is not possible to prevent complete what we can say कि हम नहीं कर सकते कि हम solid waste को generate ही ना करें. You have to generate. You will be using certain things. As I in the very first beginning, I told you that in the very first slide, कोई भी product बनेगा तो कुछ ना कुछ उसका solid waste generate होगा किसी ना किसी form में. So least favored option, if you can see, is disposal, but maximum focus is given on disposal, that is which is in the form of landfill. We can recover energy, which is a second option, in the form of incineration. यानी हम अगर solid waste को burn करें properly किसी closed chamber में, तो chances हैं कि हम उससे energy recovery कर सकते हैं. Then we can have a recycling कर सकते हैं कुछ material को, कुछ चीजें हम घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. लास्ट ऑप्शन है कि प्रिवेंट करें या मिनिमाइज करें सॉलिड वेस्ट. So these are all about the different hierarchy levels from disposal to prevention. These are the 3 R's that you reduce at the source, or you can reuse certain things, or you can recycle certain things. So divert some part of the waste stream back into the production. That means कुछ पार्ट जो आपने इस्तेमाल कर लिया उसको वापस से कुछ इस तरह से किया जाए कि वो रिसाइकिल हो सके, कुछ रीयूज हो सके और कुछ रिड्यूस कर सके एट सोर्स. These are the different composition of municipal solid waste. Here you can see the different components of our municipal solid waste. It can have a food waste, paper, cardboard, plastics, textile, rubber, leather, garden trimmings, wood, miscellaneous organic substance, glass, tin cans, some non-ferrous material, some ferrous material, dirt, ash, brick. So this chart or a table gives you detail about the different composition of a solid waste. Ideally, it have, but its percentage can vary from place to place. उसकी percentage vary कर सकती है. मैंने बताया कि शहर से शहर या फिर आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे ये सारी चीज जनरेशन भी डिपेंड करता है. बट ऑन एन एवरेज this will be the percentage of solid waste in a composition wise for a particular city. So when we talk about the solid waste management, if we are talking about the solid waste management, it can be divided into a 6 parts. Generally, we don't use the term treatment, rather we use a term management. हम ज़्यादा management की बात करते हैं because we have to manage that. Treatment is the last part, but how we are going to collect, how we are going to store,
how you are going to transfer and transport, that all depends upon different conditions. So that should be the part of a solid waste management. So the component, or what we call as principal functional elements of a solid waste management, are waste generation, storage, collection, transfer and transport, processing and disposal. आप कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट करेंगे, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे उसको ले जाने के लिए, फिर एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी जो उसको कलेक्ट करेगी, फिर कहीं ले जाके आप उसको एक प्रोसेस करेंगे. Now you are going to finally dispose of your solid waste. So that part is the last part, that is a treatment part. Either you go for a landfill, or you go for a incineration plant, or you are going to generate some compost from the organic waste. So these are the functional elements of a solid waste management, and they are interlinked with each other. So there are 6. For example, number 1, waste is generated as a source. आपके घर में कुछ waste generate हुआ. Then at source you are going to store. आप अपने घर में कुछ टाइम के लिए सोर्स पे स्टोर करते हैं. दैट हैंडल भी कर सकते हैं उसे, उसमें से कुछ चीज सेग्रीगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन सेग्रीगेट रिसाइक्लेबल मटेरियल फ्रॉम नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल. यू कैन सेपरेट ऑर्गेनिक वेस्ट. So at home you are going to store and process some of the solid waste management. Then the vehicle will come and it starts collecting solid waste. And finally, this vehicles will either go towards the transfer station, or either it will go to a segregation and process. या तो वो ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट स्टेशन, कुछ शहर में कुछ इस तरह के सेंटर्स बने रहते हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट को एक जगह ले जाके डंप किया जाता है, उनको हम कहते हैं ट्रांसफर स्टेशन. या फिर कुछ बड़े शहरों में वहां पर प्रोसेसिंग की जाती है, यानी रिसाइक्लेबल मटेरियल्स को अलग निकाला जाता है और कुछ चीजों को उसमें से कम किया जाता है. So that center is known as processing center or segregation center. And finally, either directly you can go for a disposal, that means for a landfill or a incineration, or from transport to disposal, or from segregation to disposal. So in brief, that 6 things are very important for a disposal for any solid waste management. First, second, third, and fourth, fifth, sixth parts are, and what we call them as principal functional elements. Now for a waste generation, that is the number 1 part. You can't completely remove the solid waste from the city or a country. There will be a certain amount of generation. So this is a somewhat old news, and it is taken from a Times of India. Here you can see the daily waste generation from different states in India. Here you can see the waste process percentage is very low. That means not 100% of the solid waste is being processed. For example, in a big cities or some medium cities, the waste process is only 50%, 60%, and in many states, the waste processing is only 0%, 1%, or 2%. So this is somewhat old news. Now the data will be have some improvement, but this is just to give you an idea that not 100% of the waste is processed. यानी सारा वेस्ट डिस्पोजल तक, या फिर हम कहें कि सेग्रीगेशन तक, या रीयूज तक, या रिसाइकल तक नहीं पहुंच पाता. वो कहीं ना कहीं डंप हो जाता है किसी लो लाइंग एरिया में या किसी लैंड पर. तो वेस्ट जनरेशन is a big problem. You can somewhat reduce, but you cannot completely reduce the waste generation. Then we have a storage. So in the home, you are going to store it in solid waste in a different category. Waste can be stored in a various containers. If possible, you should segregate your solid waste in the form of organic waste or inorganic waste or recyclable waste or organic waste. जो कंटेनर्स कलेक्ट करने आते हैं उन पर भी लिखा रहता है वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, सूखा कचरा, गीला कचरा. तो गीला कचरा मीन्स organic waste that can be reduced in the form of, and it can be used as a compost. So that can be a very good source of a manure, or what we call as a compost. So if you are segregating your solid waste at home, that is a very good technique for further processing. अगर आप शुरुआत में उसको segregate करके solid waste को अपने लोकल कलेक्टर को देंगे, तो वो जो कलेक्शन व्हीकल आएगा उसको भी आगे जाके आसानी होगी सॉलिड वेस्ट को पहुंचाने में. तो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हाउस होल्ड हैं उन्हें प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना चाहिए इसमें, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट में. ऑन साइट प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग प्रोसेस.
So these are the storage for individual levels. Here you can say these type of bins in use in some malls or big localities or flats or residential areas. There can be a green or blue container, one from recyclable, other for. So this can be a different types of storage can be there. These are the community level storage. Earlier was the individual level storage. Second one is community level storage that can be placed in and around your household. Earlier in many cities these were used for a storage or at a community level. First slide for individual level, second one for a community storage. Then after the storage, there will be a collection. Their collection can be in a different mode. It can have a different type of vehicle that can be used. Either it will go to a disposal site, या तो डायरेक्टली वो लैंडफिल तक जाएंगी या इंसिनरेशन प्लांट तक जाएंगे व्हीकल, या फिर किसी ट्रांसफर स्टेशन को जाएंगे. जैसे बीच में एक स्टेशन बना दिया जाता है ताकि सॉलिड वेस्ट को रोजाना आप लेके लैंडफिल तक न जाए. In between there is some stations that are known as transfer station where small vehicles will transfer the solid waste in that particular transfer station, and the big vehicles will transfer the solid waste from transfer station to landfill once in a day or twice in a day. So what we call as a collection is, we can say that it is the most costly functional element of a solid waste management because it requires different types of vehicles, and these vehicles require maintenance, labor cost, and the cost of the equipment. So in the whole solid waste management part, सबसे ज़्यादा जो महंगा पार्ट है वो collection part है. Collection के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है. Why? Because there will be a labor की cost होगी, आपकी जो vehicles हैं उनकी cost होगी, उनका maintenance होगा, fuel की cost होगी. So that's why it is called as most costly functional element. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं municipal solid waste के collection की. That's why it is in the last point it is written that industrial waste is handled separately from municipal waste, because sometimes chances is that the industrial waste will be having some hazardous material. So we can't mix industrial waste, hospital waste and other hazardous waste with the municipal solid waste, because जब आपका वो आखिर में जहाँ पर डंप होगा solid waste ले जाके, वहां पर अगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट या हजार्डस वेस्ट जाएगा तो वहां और सारी प्रॉब्लम वो क्रिएट करता है. तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट या हॉस्पिटल वेस्ट होता है उनका डिस्पोजल टेक्निक डिफरेंट. नाउ दिस टाइप ऑफ vehicles, it is a very common sight. There are small vehicles or what we call as door-to-door collection services started by Government of India in various cities or small villages or Nagar Palika. So they have different types of vehicles depending upon the condition. They are using some small rickshaw, some vehicles, small vehicles, because they want to collect the solid waste from door to door. Big vehicles can't enter in these type of small lanes, so that's why they are using different type of small vehicles. And finally, when these solid waste is being collected, it will be collected in a large vehicles finally, either from the transfer station or from these small vehicles, and they will carry this solid waste to a landfill or a incineration plant. So these are the photographs of a different equipment or what we call a transportation system that are being used for collection of solid waste. So these are different type of collection vehicles. Here you can see in the rear part or the back part of the truck, there is a compaction machine. So when we put the solid waste in this truck, the solid waste is also compacted. अब क्या होगा, जब उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे तो उसकी वजह से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा और ट्रक में कैपेसिटी ज्यादा होगी और लैंडफिल पे डंपिंग के टाइम पे भी आसानी होगी. लेकिन ये तभी सक्सेसफुल है जब आपको सेग्रीगेटेड वेस्ट मिले. अगर आपने सारा वेस्ट जिसमें प्लास्टिक भी है, कैन भी है और आपका किचन वेस्ट भी है, फूड वेस्ट भी है, इफ यू आर डंपिंग ऑल द सॉलिड वेस्ट इन अ सिंगल ट्रक, देन ऑल द वेस्ट विल बी कॉम्पैक्टेड एंड इट विल नॉट बी ऑफ यूज फॉर एनी मोर. यानी अब आपने सारी चीज मिक्स कर दी और उसको फिर कॉम्पैक्ट भी कर दिया, उसकी वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, तो वो आप डायरेक्ट सिर्फ लैंडफिल के लिए ही रह जाएगा. अब हम उसमें से कुछ रिसाइकिल या रीयूज नहीं कर पाए. So these are the different photographs in which compaction machine is in the rear part of the vehicle.
in the some developed countries, they are using these type of vehicles. They are having a uh, collection vehicles in which we have a automated arm, यानी अपने आर्म से वो आता है व्हीकल, अपने सामने से कंटेनर को उठाएगा इस तरह से और डंप करेगा पीछे पार्ट में. So this is known as front loading compactor vehicles that are being used for solid waste collection. These are also front loading compactor. In India, we are not using these type of front loading compactor, but in various countries, they are using these type of front loading compactor. This is also a rear loading compactor. In the पीछे वाले पार्ट में इसमें आप सॉलिड वेस्ट को डंप करके कॉम्पैक्शन भी साथ साथ कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट. दिस इज अ साइड लोडर ट्रक्स इन विच द सॉलिड वेस्ट इज डंप फ्रॉम द साइड पार्ट. This type of vehicles also not being used in India. They are automated collection system. Only one person is responsible for whole truck and collection. The person will come with a truck and he will collect your solid waste. If the bins are put like this, and the automated arm will come, एक आर्म निकलेगा उसमें से मशीन में से और वो डायरेक्टली उसको पिक करेगा सॉलिड वेस्ट को और फाइनली एम्प्टी कंटेनर्स को उसी साइड पर छोड़कर चला जाएगा. So only one person is doing all this work, and this is known as automated collection vehicles. So in Western countries or some developed nations, they are using these type of vehicles also. In India, the compaction truck is very common. They are being used for compaction of a solid waste simultaneously. These are also automated collection vehicles. Here you can see arm is taking this solid waste container and putting all the solid waste in the truck. Then we have a tilted frame container in which all the solid waste is put in these type of container and put it on this tilted frame horse. And when it reaches to the landfill, they just tilt the frame and all the solid waste is being dumped in the landfill. So these are about the collection vehicle. Now we talk about the different collection services. Collection services required certain amount of funding. So there can be a different type of collection services. For example, we have a municipal collection services that Nagar Nigam, Nagar Palika or Nagar Parishad do. They have a funding from government, or they charge some with some percentage from the house tax, or they directly collect money from your door to door. So we have some municipal collection services. Then we have some commercial or industrial collection services, that some industries are hired or commercial collection services are there. They are going to charge you. So in a residential collection system, there will be some funding collection services. It can be collected from property tax. It can be in the form of utility bills. डोर टू डोर कलेक्शन होगा और आपसे वो मंथली कुछ पैसे जो है रुपए चार्ज करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट. सो द कंसेप्ट इज पे वाईटी. व्हाट वी मीन दैट पे एज यू थ्रो, यानी आप सॉलिड वेस्ट को डंप कर रहे हैं तो कुछ आपको भी पैसा देना पड़ेगा टू मेक द प्रोसेस सस्टेनेबल. यानी हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस चलता रहे, उसकी फंडिंग होती रहे, तो हम उस प्रोसेस को चलाने के लिए उसमें हमें कुछ फंडिंग करनी है. दैट concept is known as pay T, or what we call as pay as you throw. Then we have different type of collection system based on mode of operation. ये collection services हो सकती हैं जिसमें हम हॉल कंटेनर सिस्टम होता है और एक स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम होता है. What we do in the हॉल कंटेनर सिस्टम, हॉल कंटेनर सिस्टम में ट्रक के साथ सॉलिड जो आपका कंटेनर है वो भी ट्रक के साथ मूव करता है. दैट मीन्स द ट्रक विल कैरी सॉलिड वेस्ट कंटेनर अलोंग विद इट, एंड आफ्टर डंपिंग द सॉलिड वेस्ट एट अ डिस्पोजल साइट और अ ट्रांसफर स्टेशन, इट फाइनली गोज बैक टू द collection point. So the main point for this type of system is that truck will carry the container towards the disposal side, and finally the empty container will be dropped back towards the collection point. So this known as haul container system, कि एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर भी ट्रक के साथ मूव कर रहा है. इस तरह के सिस्टम को हम जनरली कमर्शियल वेस्ट में या कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के वेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, जब वेस्ट की क्वांटिटी या वेस्ट का वे जो है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी हैवी वेस्ट टाइप की चीज है, कमर्शियल वेस्ट. So that type, in that case, we use these type of
hauled container system. Another type of system is stationary container system, in which you can see the container does not move along with the truck. The truck will come towards the collection point. It finally takes the solid waste, and finally it will just take the solid waste and not container. यानी अपने साथ वो कंटेनर को नहीं मूव करेगा, वो कंटेनर को सिर्फ एम्प्टी करेगा जो आपका वहाँ सॉलिड वेस्ट कंटेनर है, और ट्रक जो है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव कर जाएगा। और ये जब तक पूरे दिन में मूव करता रहेगा जब तक कि उसको फाइनली ट्रक का वॉल्यूम के हिसाब से पूरा फिल ना हो जाए, एंड फाइनली इट विल गो टू अ ट्रांसपोर्ट स्टेशन और processing station. So we have a two type of collection system. One is hauled container system, another one is stationary container. Now, when we are designing a collection system, we have to calculate the number of vehicles. So this is just a problem कि अगर हमें कितना solid waste generate करना है उसी हिसाब से या उस region में कितना solid waste generate होता है per day, अगर हमें वो पता चल जाए तो हम अपने ट्रक के वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ व्हीकल्स या नंबर ऑफ विजिट्स को डिसाइड कर सकते हैं. So we have to calculate the number of vehicles in a particular city or a locality, and then we have to calculate the number of vehicle time on the route. How much the time will be spent by each vehicle in particular area. यानी अगर कहीं पर वो जा रहा है उसको 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, उस हिसाब से उसका टाइम को कैलकुलेट करना होगा ताकि हमें पूरे दिन का एक चार्ट मिल सके कि in 8 hours what will be the collection. Is it possible to collect the whole waste in one day, or it will require 2 trucks or 3 trucks to collect the solid waste in particular city or a locality. Then the third point is routing. Routing means you have to decide the route. We can't say that the truck will move independently. You have to decide its location. From today it will go towards that particular locality. From that locality it will move toward the second point, to the third point, and similarly to the last destination. So you have to decide its route, and that is a part of routing. So there are certain vehicle routing methods. For example, we have a manual routing, यानी हम खुद से डिसाइड करें कि शहर में कौन कौन से पॉइंट पे वो जाएगा, या फिर कुछ रूल्स बनाए हैं, एक एजेंसी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जिसमें कुछ रूल्स हैं, या फिर हम कंप्यूटर असिस्टेड राउटिंग करें. दैट मीन्स वी कैन डिसाइड बाय सम प्रोग्रामिंग और फ्रॉम अ गूगल मैप और सम satellite image that where the trucks will move first and it will move second, or how we are going to decide which point will be the first and which point will be the last. So we can take the help of some computer programming or some mapping or some imageries or from some GIS help. So what are the factors that are helpful in designing pickup routes? That while we are deciding the routing, there should be no U-turn. यानी ट्रक के लिए कोई U-turn नहीं होना चाहिए बार बार. लोडिंग टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम व्हीकल्स में लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में. लेफ्ट टर्न्स आर प्रेफर्ड, कि लेफ्ट टर्न अगर ड्राइविंग है तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड ड्राइविंग किसी कंट्री में है तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड. वॉल्यूम ऑफ द ट्रक शुड बी कैलकुलेट, हाउ मच द सॉलिड वेस्ट कैन बी कैरिड इन अ पर्टिकुलर ट्रक. Travel time to transport station, that means that I've already told you that time is very important in case. Optimization, that means we can take a help of a computer programming or optimizing by using some mapping techniques or GIS techniques, which vehicles will go for first place or a second place. So proper map should be there. So this is one of the examples for optimizing a municipal solid waste. Here you can see in the first figure A part, there is interconnected city and all the roads are interconnected. So we have to put different bins at different locations. So in the second part, they have decided or optimized the solid waste collection route. So they have optimized the route by making a route such that there are no overtaking or no overlapping of route tracks is done by the truck. यानी एक जगह ट्रक जहां चला गया वो बार बार उस ट्रक उस जगह पर दोबारा उस रीजन में नहीं जाएगा. So they have made an optimized route for this particular city. Final destination it will finally move towards destination in such a manner that overlapping of route or no overturning or no U-turn should be there in particular city or a particular location. The bin location is also important. All the dustbins on a container should be in such a position that truck will be able to reach them very easily
and it can collect the solid waste in time without spending too much time on loading and unloading. Then we have a fourth point, that is a transfer station. That is a very important part of a solid waste management. Here you can see in the first figure, that is figure 1, there is a route. So, पूरे दिन भर का रास्ता है, कलेक्शन रूट बने हुए हैं कि पूरे दिन भर सॉलिड वेस्ट कलेक्ट होगा किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, एंड फाइनली जब ट्रक भर जाएगा, द ट्रक इज फुल ऑफ solid waste, it will finally move towards the disposal site, and after emptying the solid waste, it will directly come towards the collection bin. So this method is known as direct haul, and this distance is known as collection to disposal distance. So very first method is कि बार बार ट्रक जाएगा, जब भर जाएगा तो वापस आएगा, फिर डिस्पोजल साइट पर जाएगा और फाइनली आपके सॉलिड वेस्ट को डंप कर देगा. Now comes the transfer station. बहुत सारे शहरों में कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं सॉलिड वेस्ट के, that we call them as transfer station. The purpose of transfer station is that the small vehicles, earlier the vehicles were of large size, but in case of transfer station, the small vehicles will collect the solid waste throughout the day. यानी पूरे दिन भर में स्मॉल व्हीकल्स आपके सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते रहेंगे पूरे शहर में, और फाइनली दे आर गोइंग टू डंप इट ऑन ट्रांसफर स्टेशन, and then they will come back again, collect the solid waste and dump it to the transfer station. And once in a day or twice in a day, large size trucks will come and they will fill all the solid waste from transfer station, and finally they will dump it to the disposal. So this method of providing a transfer station when the distances are large, generally disposal sites are outside the city or outside the locality, and generally they are 10 kilometers or 20 kilometers outside the city. So to make the transport easier, the collection routes are not directly connected to a disposal site. In between, they are providing a transfer station. So this transfer station initially costs something, but later on, when the distances are large and time spent on this system is large, the whole of the solid waste collection system and the whole money spent on this transfer system will be reduced. So this will be more economical as compared to direct haul, क्योंकि आप शुरू में स्मॉल व्हीकल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्मॉल व्हीकल्स को इस्तेमाल करने की वजह से सॉलिड वेस्ट जो है आपका जो है वो एक दिन में कलेक्ट होके ट्रांसफर स्टेशन पर जाता है, और एक ट्रक आपका बड़ा जो है वो आता है और वापस सारा सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल साइट तक ले जाता है. तो आपका शहर में स्मॉल व्हीकल्स चल रहे हैं, और एक व्हीकल जो लार्ज साइज का है वो आपका एक दिन में एक या दो बार वो ट्रांसफर स्टेशन से कैरी करके डिस्पोजल साइट पे ले जाता है. तो इसमें क्या होता है कि सॉलिड वेस्ट का जो पूरा कॉस्टिंग जब निकाली जाती है कलेक्शन में, तो इसमें इकोनॉमिकल पड़ता है. If you can see in this graph, on this axis there is a cost per ton for this system, and another on this axis we have a kilometers, hours or minutes. So if you see in a direct haul system, initial cost is zero initially, but as soon the time passes, the direct haul cost is more, because you are spending more money on fuel as the distances are large. But in case of transfer station, the initial cost is large as compared to direct haul, but as soon the distances are increasing, it is not causing much effect on the in the whole solid waste management plan. यानी अगर आप ट्रांसपोर्ट स्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत शुरुआत में तो थोड़ी ज्यादा होती है, बट लेटर ऑन एज द डिस्टेंसेस आर लार्ज और टाइम इज मोर, the transfer stations are more economical as compared to direct haul, and the point where it crosses is known as break even distance. यानी इस distance के बाद आपको transfer stations are more economical as compared to direct haul. So these are the some photographs of transfer station. We provide a shade, and all the small vehicles will come towards these transfer station, and they will dump the solid waste that they have collected in the whole day, and finally they will take the big trucks will come and they will take all the solid waste from these transfer stations. So this is a diagram for a transfer station. Here you can see incoming vehicle
that have collected the solid waste is coming, and it is putting all the solid waste at transfer station in this hopper, and all the waste will come and being collected in this container, and there is a compaction machine. So when we put the solid waste, compaction machine is continuously compacting the solid waste, and finally when they compact the solid waste, this container will be put it on the truck, and finally it will go to the disposal site. So here you can see the size of the incoming vehicle is small as elements of a solid transfer station. So when we are providing a transfer station, why we are providing a transfer station? Because when the distances are large to disposal site, whether it is a landfill or a incineration, जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अगर हम ट्रांसफर स्टेशन प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा पैसे की बचत होगी. शुरुआत में उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, बट लेटर ऑन एज द टाइम स्पेंड ऑन द सिस्टम will be more, or the distances are large, you will be have much saving. Now we have a processing center. Some of the solid waste will go to the processing on transformation of the solid waste, where the solid waste will be used for a recycling, or some gas generation can be done from the organic waste, composting can be made. So in very large cities, for example, I have an example for a waste processing center in a Salegaon, Goa. There is a very large or a huge processing center where solid waste is being converted into a very useful, or we can say that resource recovery is being done. For example, they are generating electricity from solid waste by burning the solid waste. Combustible material are being burned in a solid waste, and they are also generating certain amount of compost there. They are also recovering some recyclable material. So here you can see there is a manual sorting is being done. Each person is being assigned a certain task to collect the solid waste, and they are segregating manually. Then we have these type of conveyor belts in which all the e-waste is being collected. So in this way, they are doing lots of recycle, composting, energy recovery in the form of incineration, or they are also generating a biogas from biomethanation plant. So all these things are being done at a single point in various processing center. In India, we don't have much these type of processing center, but many cities are having these type of processing center in a big city, for example, in Pune, Indore, or in Goa. So they have this type of system, and they are very useful in case of recovery of material. Then we have some refuse drive fuel. Yeah, that means you can drive certain amount of combustible material from these solid waste, and they are known as refuse drive fuel. So here you can see solid waste is coming. They are being processed with different type of processing in the processing center. They are segregating out ferrous material, यानी जो मेटालिक पोर्शन है उसको अलग कर लिया सॉलिड वेस्ट से. कौन सा मटेरियल रहेगा? सिर्फ वो वाला मटेरियल रहेगा जो कंबस्टेबल है, दैट कैन बी बर्न. So they are processing all the things at a single point. They are segregating the ferrous material, organic waste, and they are just taking that fraction of positive waste that can be used as a combustible material. And finally, this combustible material, for example, plastics or some wood, is being processed through this center, and they are being converted into a small powder type of form. And when they are being converted into powder type of form, they are being stored, and the bricks are being made from this type of material. And the whole method is known as refuse drive fuel. That means आपने solid waste से एक fuel बना लिया, and that RDF can be sold to different type of industries where they need some fuel for burning in the boilers. तो ये इस तरह के bricks type के या छोटे छोटे blocks type के बना लेते हैं solid waste से. और ये कौन सा material है? ये combustible material है that can be used as a fuel. So what we call them as? We call them as RDF, refuse drive fuel. Now this is a technique for what we call as a final disposal technique, or a last part of a functional element of a solid waste management. We call it as a landfill. Here you can see this is not an engineered way or a landfill.
this is just a dumping site where we are creating lots of pollutants, we are creating lots of unethical practices being done here. सिर्फ आप डंप कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं लैंड को भी और अपने ग्राउंड वाटर को भी. This is a photograph of a Ghazipur landfill situated in near Delhi. Here you can see the size of this landfill, so huge. Here you can see the size of this land. All the solid waste is being dumped here. We have another case study. This is I have visited a few years back, around 5 or 10 years back, 5 years back in Assam. Here you can see two figures. One is of a dumping site, and here you can see a green picture of some wetland. This is a Boragaon landfill, and this is a Depor Beel, Guwahati. Beel is generally used a term in for a jheel or what we call as a lake, and this is situated in the Guwahati. In other photograph or a Google map, here you can see Brahmaputra is flowing in a Guwahati, and this yellow line is showing the boundary for this Depor Beel or what we call as Depor Jheel, and this Beel is also a bird sanctuary. But the main problem with this is where here you can see there is a landfill is also situated in the nearby area. Here you can see where I am inserting Boragaon landfill site. So what you think, the landfill come first or this water body could come first? Obviously the water body already exists and they have constructed a landfill on just on the periphery of this. एक झील के किनारे उन्होंने एक लैंडफिल बना दिया. तो हुआ क्या कि अब ये तो डेपोर बील है आपकी जिसमें बर्ड सेंचुरी है और जस्ट उसके बराबर में आपने एक लैंडफिल या डंपिंग साइट कंस्ट्रक्ट कर और एक ये बर्ड है जो बहुत विजिबल है उस एरिया में. जैसे ही कोई ट्रक आता है वहां पर सॉलिड वेस्ट का, ये ट्रक को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके सॉलिड वेस्ट को फौरन उसमें से अपना खाना तलाशती है क्योंकि उनका घर भी बराबर में, ये वहीं पर बराबर में आपके डेपोर बील में बर्ड सेंचुरी में रहते हैं. जब उनको फूड चाहिए होता है तो इन दिस वे यू आर डिस्कसिंग दैट इकोसिस्टम. So that's why whenever you are deciding to place your landfill, you have to decide about the soil condition, water table, because whenever there is any wetland or a river body or a ground table is very high, the chances that you are going to pollute that groundwater or a water table. So there are a landfill hazards that can cause problem. Stray animals can be there, odor problem is there, there is a fire problem is there, spread of diseases can be there, there is a contamination of soil can happen, contamination of groundwater can happen, gas emissions. लैंडफिल्स के अंदर जो कंडीशन होती है वो एनारोबिक होती है और एनारोबिक कंडीशंस में क्या होता है कि बहुत सारी गैसेस ऐसी निकलती हैं जो हार्मफुल है और ग्रीन हाउस गैसेस का भी काम करती हैं और उसके अंदर आग बहुत जल्दी लगती है. दे आर कंबस्टेबल नेचर. फॉर एग्जांपल मीथेन इज जनरेटेड ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन. तो वो जैसी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी तो चांसेस है कि सॉलिड वेस्ट में बर्निंग में भी हेल्प करे. तो आपके लैंडफिल्स में अक्सर देखा होगा आग बहुत जल्दी लग जाती है और वजह उसकी यही है कि अंदर की कंडीशन एनारोबिक होती है और उसमें से गैसेस भी रिलीज होती है. अब इस तरह से ओपन में डंपिंग होती है तो स्प्रे एनिमल्स हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस हैं. तो दैट्स व्हाई देयर इज आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन फॉर लैंडफिल्स. यानी आप कहाँ लैंडफिल्स नहीं बना सकते. यू कांट कंस्ट्रक्ट अ लैंडफिल नियर अ एयरपोर्ट. यानी एयरपोर्ट के आसपास लैंडफिल नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि अगर आप लैंडफिल्स बनाएंगे तो वहाँ बर्ड्स बहुत ज्यादा फ्लाई करेंगे एंड दैट विल कॉज problem in flying of airplane. We can't construct landfills near a wetland. Why? Because the water table will be very high, so there is a chances of groundwater contamination. Fault lines, geological fault lines हमें पता होती हैं, वहां पर नहीं कर सकते. Unstable areas, for example, in a hilly areas, it is not recommended to construct a landfill. Endangered species, या आपको कोई आपका बर्ड सेंचुरी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास भी आप लैंडफिल्स को कंस्ट्रक्ट करें. तो these all are about the planning part. यानी इन जगहों पर आप लैंडफिल को या अपने जो डिस्पोजल को है उसको नहीं कर सकते. अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लैंडफिल इज लीचेट जनरेशन. लीचेट एक तरह का लिक्विड है जो सॉलिड वेस्ट के अंदर से कंटिन्यूअसली निकलता रहता है. जब आपने कभी लैंडफिल को या कहीं सॉलिड वेस्ट डंप होता है तो देखा होगा वहां पर पानी आसपास जरूर रहता है. वो पानी क्या है? बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट है और आसपास के ड्रेन से जब पानी उसके कांटेक्ट में आता है तो एक लिक्विड जनरेट होता है, दैट इज नोन एज लिक्विड
is known as leachate, and that liquid is very harmful because it contains all the impurities of a solid waste. यानी सारी जितनी भी उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं या कोई और भी impurities है वो किस में आ जाएगी, पानी के अंदर आ जाएगी। और अगर आप इस पानी को मैनेज नहीं करेंगे, that means if you are not managing this leachate properly, you are going to pollute the environment, either in the form of a land pollution, soil pollution, or a groundwater pollution. So this is the common site of a leachate you can see in and around the landfill. Here you can see lots of leachate is being generated near the landfill. This table shows the different characteristics of a landfill. In terms of, as an environmental engineer, we talk about that it is having a very high COD level. It is having a very high BOD level, and it also having a different types of heavy metals that are being present in the solid waste and that are being leached into the leachate. यानी जो impurities आपके solid waste में थी वो leach out करके किस में पहुंच गई, उस पानी में पहुंच गई जो आसपास वहां पर था। और solid waste के अंदर अपना खुद का भी moisture content होता है जो कुछ टाइम के बाद बाहर आता है। So that's why you have to manage the leachate properly. हम नहीं चाहते कि वो ग्राउंड वाटर के तक जाए या नीचे की तरफ। Now the landfill will also have some gas, and I have already told you कि उसके अंदर की condition कैसी होती है। The condition inside the landfills are anaerobic conditions, and in anaerobic conditions we have a generation of methane, and that methane can be if collected, it can be a good source of energy also, but you have to properly manage the landfill gases. So in this way, this is a typical diagram for a sanitary landfill or in what we call as engineered landfill. Here you can see you have to provide a liner. That means you have to provide some bottom layer so the solid waste should not come in contact with the soil or a groundwater. So it will restrict the leachate movement, यानी जो leachate इसके अंदर generate हुआ होगा landfills के अंदर वो नीचे की तरफ नहीं आ पाए. So you have to construct a liner, and you have to also maintain a gas level inside the landfill, and you have to also maintain the leachate. And finally, जब एक time हो जाएगा, you have to cover your landfill with a cover. So there are 4 important components inside the sanitary or what we call as engineered landfill. In the bottommost portion, you have to provide liner. In the topmost portion, you have to provide a cover. Then we have a top leachate collection system. We have a methane collection. So they are going to restrict the movement of a leachate. So the groundwater or a soil is being not polluted. So this is a typical cross section of a landfill. There are liners, and on the top there is a cover system. There are groundwater monitoring wells. कि आसपास का groundwater तो नहीं कहीं contaminate हो रहा, तो आसपास कुछ wells बनाए जाते हैं ताकि complete monitoring can be done. So we can check whether there is some leaching of leachate is there or not. So this is a typical cross section for a landfill. This is another typical cross section for a landfill. Here you can see. Here you can see different stratification here you can see a different stratification of a solid waste. Different layer में solid waste को dump किया गया है, और dump करने के बाद उसमें हमें क्या बनाया है, बहुत सारे wells बनाए। আমাকে বলে দাও সেন্টার ছিল আমাকে দিয়েছে হ্যাঁ নিজের ঘরে। Sir, sorry to interrupt. Amir sir, please mute yourself. It's creating a glitch. Okay, sir. Please continue. Okay. So we are providing a different wells in the landfill. So these wells will act as a gas collection system. Whatever be the gas being generated inside these landfill under the anaerobic conditions, that will be collected through these wells. And also we have to provide a system that can collect leachate. So there will be 2 systems, leachate collection system and gas collection system, and in the bottommost portion you have to provide a liner. I will show the photograph in the next slide. This is a typical plan of a landfill area. You are not going to dump your solid waste in a continuous manner. You have to manage it properly. For example, in a whole area you have to dump
solid waste in a phase 1, then you will go for a phase 2, phase 3, phase 4, phase 5th, phase 6. So in that case, each cell of a landfill will be completed first, covered, and finally we will move towards the second phase, third phase. So proper way of management of solid waste will be done. So you can't have a unpleasant look, or what we can say, it should look like a aesthetically beautiful. यानी देखने में भी वो लैंडफिल लगे कि ऐसा ना लगे कि आपका डंपिंग साइट है कि हम उसके आसपास ना जाना चाहें. So proper planning should be done for this type of landfills. Now the liners, जो आपको सबसे नीचे के लेयर में बिछाना है, जिसको हम कहते हैं liners. Liners are basically a low permeability barrier layer. They are generally made up of a compacted flow. As we all know, though, that clay is having a low permeability, यानी पानी उसके थ्रू कम पास हो पाता है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्ले की लेयर देते हैं और उससे शीट की लेयर देते हैं. And that sheet is known as geomembrane. Sometimes the combination of both can take place, यानी compacted slab soil भी है और geomembrane भी है. ये पर्पस क्या है नीचे लाइनर देने का, ताकि जो लीचेज जनरेट हो रहा है वो सॉलिड वेस्ट के साथ नीचे लाइनर एक पॉली शीट की तरह समझ लीजिए कि एचडीपी मटेरियल होता है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. एक प्लास्टिक शीट को हम बॉटम मोस्ट पोर्शन में एक लेआउट करते हैं ताकि लीचेज अगर जब बाद में जनरेट हो तो वो नीचे की तरफ ना जाए. So this is a laying out of a liner. This is the initial stage of a landfill. Here you can see they are laying out different layers of a HDP liner, and after that HDP liner they will construct a leachate collection system, then they will construct a gas collection system, and finally they will start landfill. And one more thing, that these landfills are not designed for a 6 months or a 2 months or a 4 months. They are generally designed for a 10 years, 15 years or 20 years. So the capacity of these landfills are very huge, and depending upon the generation of a particular area or a particular locality, they are also going to decide what will be the future population of a city. And on that basis, just like a water treatment plant or a wastewater treatment plant, they are going to decide what will be the capacity of these landfills. So they are huge. They are not just small. Dumping will take place for a next 10 to 15 years. So another photograph of a liner that is being laid out in this landfill. Another somewhat completed layer-wise lining has been done. Now here you can see after the liner, they are laying out pipes, and these pipes will be used for a collection of leachate. यानी आपका जितना भी leachate नीचे जो भी जनरेट होके आएगा, सिर्फ अपना वहीं का पानी नहीं होता. सॉलिड वेस्ट का आसपास क्या होता है कि बारिश है या कोई और ड्रेन है, रेनफॉल की वजह से जो पानी लैंडफिल के अंदर आ जाता है वो भी लीचेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो हम नहीं चाहते कि वो लीचेट नीचे की तरफ मूव करे. हम चाहते हैं कि वो ऊपर लेयर में रहे लाइनर के, और अगर जब ज्यादा हो जाए तो हम उसे कलेक्ट कर सकें इन पाइप की. So that's why these liners and leachate collection system is being provided in the landfill. This is another photograph of a landfill liner. Here you can see, if you are able to see, you can see there is some slope in the bottommost portion. Why we are providing a slope? Because we want all the leachate that is being generated in the landfill is being collected in the slopey side. यानी जिस तरफ हाल है उसी तरफ की तरफ वो सारी चीजें कलेक्ट हो जाएं आपकी, और वो आप फाइनली एक पंप में जाके लीचेट कलेक्ट हो और वहां से आप पंप आउट कर. लाइनर्स कैन बी अ सिंगल लाइनर सिस्टम. एक हो सकता है लाइनर, कंपोजिट हो सकता है, कई लेयर्स हो सकती हैं. डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट इट कैन बी अ. So material HDP, PVC are being used. These type of pipes are being used. They are perforated, so the leachate can pass through them. These are the perforated pipes. Here you can see there are holes, and all the leachate will be passed through this, and solid waste will be dumped over it. And finally, after the whole process is being completed, अब इसकी एज हो चुकी है लैंडफिल की, यानी कि अब लैंडफिल इज बीइंग has completed its 8 whole years, for example, after 10 years or 15 years. Now you have to cover it also. Whatever the things you have provided in the bottommost portion, for example, you have provided clay, liners or some leachate collection system,
On the top of the most portion, you also have to provide a soil layer, clay, and a cover system that will also be made up of a same HDP liner. क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि जब इसकी एक एज हो चुकी है तो अब इसमें फर्दर कोई चीज इसके अंदर एंटर करे या पानी इसके अंदर जाए और वो फर्दर लीचेट में कन्वर्ट हो. दैट्स व्हाई वी फाइनली प्रोवाइड अ लैंडफिल कवर एंड फाइनली द लैंडफिल विल बी कंप्लीटेड. अब इसके बाद इस पे हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारी जगहों पर दे ले आउट द सॉइल लेयर, एक सॉइल के लेयर ऊपर दे देते हैं टॉप पर, ताकि कुछ घास या कुछ हल्का सा वेजिटेशन इस पे किया जा सके. लेकिन खास बात यह है कि इसके ऊपर हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. वी कांट डू एनी कंस्ट्रक्शन. ये माउंटेन की तरह तो लगेगा देखने में, लेकिन आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इसके ऊपर कोई ऐसी हैवी व्हीकल्स नहीं चला सकते. बट इट कैन बी यूज एज अ रिक्रिएशनल पार्क, यानी आप रिक्रिएशनल पार्क के तौर पे इसको डेवलप कर सकते हैं. वो लगेगा कि आप वहाँ पर घूमने जा सकते हैं एक पार्क के फॉर्म में. तो आई हैव सम फोटोग्राफ फॉर this is not, these photographs of not from India, they are from US. They are using the top of these landfill as solar park. यानी उन्होंने क्या किया, जब लैंडफिल कंप्लीट हो गए तो उसके ऊपर अपने सोलर पैनल्स लगा दिए, क्योंकि ये और किसी तरीके से तो इस्तेमाल नहीं हो सकता लैंड. ये सबसे ज्यादा खराबी इस लैंडफिल की यही है कि आप इसको दोबारा उस लैंड को रिक्लेम नहीं कर सकते, दोबारा रीयूज नहीं कर सकते. So that's why this is one of the method that can be used. You plant your solar panels on that top of them and you can generate electricity. Another way, you can construct a solar, this photograph also for a solar panel. Here you can see recreational parks can be constructed, but not heavy buildings or a road cannot be constructed on these lands. So these are the another photographs. These are some other photographs of the landfill. Now the landfill gases. So that the gases inside this landfill should be collected, and that can also be a source of energy. यानी जो आपकी gases इसमें से निकलेंगी वो भी energy का source है, because इसमें क्या है कि एक गैस बनती है जैसे हम कहते हैं मीथेन, एंड मीथेन हैज अ कंबस्टेबल वैल्यू, यानी उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो दो तरीके हैं, या तो आप लैंडफिल की गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने दें और उसको जला दें वहीं पर लैंडफिल के ऊपर. अनदर मेथड इज दैट यू कैन कलेक्ट दिस गैस and use as a fuel. So we have two types of wells. One is known as passive wells, which are open to atmosphere, यानी वो open to atmosphere है, आप burning कर दें या रिलीज कर दें environment में. दूसरा है कि active wells बनाए जाएं लैंडफिल के ऊपर, वो collection में आपके इस्तेमाल. So this is another photograph. Here you can see collection system is there, and this collection system is for gases, and all these wells are being connected by these pipes, and finally they connected to a blower, and after cleanup they are generating electricity, and that electricity can be used on site or can be provided to a local grid. So this one is active well and this one is passive well, open to atmosphere, and another one is which is connected to all the wells, and finally they are collecting the gases. So here you can see on the top of the landfill, these type of vehicles, these type of collection system are there for gases, and ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कनेक्ट होके आपका किसी एक जगह पर वो ले जाए जाते हैं. देखिए on the top of the landfill, these collection system is there for a gases. And if you are not collecting this type of gases, you have to clear it off. आप इसे जला भी सकते हैं. तो depending upon your requirement, अगर आप इसको properly manage नहीं कर पा रहे हैं, नहीं collect कर सकते, तो आप एक useful resource को, तो अच्छे खासा इसमें energy value होती है landfill gases में. और initial years में शुरुआत के 5 to 10 years the generation of gases is more. शुरुआत के सालों में gases बहुत इसमें बनती है. As soon the decomposition starts, फिर कुछ टाइम के बाद gases generation कम. This is another photograph of a gas crystallization system. Here you can see gas is coming from a landfill. It is being stored in this container, and finally cleanup of gas will take place. For example, if it will be having some sulfur, so you have to remove the sulfur, and finally through compressor this will go to the gas engine, and these gas engines are
basically generators which are going to generate heat or electricity. So in this way, you can utilize these type of landfill gases. From a waste, you are going to have certain amount of useful product in the form of energy. Now, the second disposal technique is incineration, that is waste to energy. Here you can see the waste is coming from field and they are being dumped. After combustion, heating the burning the solid waste, you can recover some energy in the form of steam or electricity. Some flue gases will need cleanup. So this concept, it can be used for generation of energy also. So but the main problem with this method is that you have to manage the air pollution, because you are going to burn lot of solid waste in a closed chamber, and there will be a generation of some harmful gases that you have to clean up in some manner. आपको यहाँ पर कुछ एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे अपने इंसिनरेशन प्लांट से, ताकि सारा सॉलिड वेस्ट जो है क्या हो, एक जगह पर बर्न हो, फिर उसके बाद उसमें से जो गैसेस निकले उनको हम ट्रैप कर सकें या क्लीन अप कर सकें, या उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज ना होने। तो इसको जब हम बनाते हैं तो इसमें इंसिनरेशन प्लांट को एक तो क्लोज चैम्बर देना है इसको, दूसरा टेम्परेचर बहुत हाई रखना है ताकि वो बर्न हो सके, ठीक। और इस टेम्परेचर को बर्निंग में टाइम चाहिए, उसके लिए हम इनफ टाइम प्रोवाइड करें। वी हैव टू प्रोवाइड हाई टेम्परेचर एंड टर्बुलेंस, because without turbulence you are not going to mix the solid waste. So 3 T's are required for a incineration plant: time, temperature and turbulence. Another thing that is very important during a combustion process is ignition source. Triangle we have on the apex, it is combustible material. Oxygen is also required. Ignition process, because combustion is a process in the presence of oxygen. तो अगर आप उस चेंबर में बर्न कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, तो आपको कहीं ना कहीं तो उसमें क्या प्रोवाइड करना है, एयर का सोर्स भी प्रोवाइड करना है टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन। अनदर थिंग दैट यू हैव टू प्रोवाइड इज इग्निशन सोर्स। सॉलिड वेस्ट अपने आप से बर्न नहीं होगा, देन यू हैव टू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ इग्निशन सोर्स। फॉर एग्जांपल, यू नीड अ डीजल और अ पेट्रोल टू स्टार्ट द बर्निंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट combustible material that is coming from solid waste. So these 3 things are important, and these 3 T's are important: time, temperature and turbulence. Now there will be a 3 or 4 phases in the mechanism of combustion. Initially you have to dry your solid waste to remove the moisture, so that will be done at 150 degrees centigrade. Now for volatilization of vapors and gases, you have to raise the temperature of a solid waste to 150 to 700 degrees centigrade, and then we have to burn the solid waste where at a very high temperature, that is 700 to 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जब आप बर्न करते हैं तो सारी गैसेस भी बर्न हो जाती हैं, और यही हमारा टारगेट है कि हमें हर चीज को बर्न करना है। कंप्लीट कंबस्शन होगा तभी मिनिमम अमाउंट ऑफ गैसेस विल बी रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। This is just to give you an idea the size of a incineration plant, or what we call as solid waste to energy plant. It is situated in Okhla. You can see it just look like a industry. Then we have a different components of a waste to energy plant. Here you can see the solid waste truck is coming. Here you can see the solid waste is coming, and then putting it into a pit, and finally from this pit, this hopper or a crane, this solid waste will be dumped in the combustion unit, that is an incineration plant. In the first chamber, all the solid waste will be burned, and in the bottom of this chamber, you can see a word used as grate. That grate is being used for burning the solid waste, and in the bottommost portion, you can also see fan-like structure. This fan is providing oxygen to the chamber, because this combustion process is in the presence of oxygen, so that's why you have to provide oxygen or air. So after combustion, there will be heat energy is released, and that heat energy is trapped by heat exchanger. Here you can see there is a lot of heat exchanger, and that heat exchanger will be used to generate electricity by using a boiler. And finally, we get 2 byproducts also, that are bottom ash and
fly ash. So you have to trap that bottom ash and fly ash also, because whenever this will be released in the atmosphere, you have to trap it. So air pollution control devices are being kept here. For example, spray dryer is there, bag house is there. ये आपको बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह एक वर्कआउट हो रहा है पूरा, कि जैसे इंडस्ट्री में भी एयर पोल्यूशन के कंट्रोल डिवाइसेस लगाए जाते हैं, उसी तरीके से आपके वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भी आपको क्या प्रोवाइड करना है, यू हैव टू प्रोवाइड वेस्ट टू एनर्जी कंट्रोल devices for air pollution. So we have, in this case, we have provided spray dryer and bag house. And finally, some of the bottom ash will also go towards landfill. यानी जो राख बची है आपकी, दो तरह का इसमें होता है, एक तो फ्लाई एश होती है, दूसरा इसका बॉटम एश होती है। थर्मल पावर प्लांट में भी कुछ इसी तरीके से होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ स्टीम by burning the coal, and during the combustion of that coal we release bottom ash as well as fly ash. So these are the components of a incineration plant. Here you can see the crane and hopper. Waste will be fed here and waste will come towards in the bottommost portion, and this bottommost portion is known as grate. So this is the second photograph is during the construction of a grate. Here you can see in the grate there is some openings in the bottommost portion. In the first figure you can see there is some openings in the bottommost portion, and that bottommost portion opening is being used to send some oxygen. यानी बीच में छोटे छोटे होल्स हैं, और इन होल्स की हेल्प से क्या किया जाता है कि गैस एयर को अंदर चैम्बर में पहुंचाया जाता है ताकि कंबस्टन हो सके, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन। लेकिन बस इन सारे प्रोसेस में इंसिनरेशन में एक ड्रॉबैक है कि you are generating electricity, you are generating heat energy, but you are also generating certain amount of air pollution, और जहां पर ये सॉलिड वेस्ट को रखा जाता है उसकी वजह से कभी कभी ऑर्डर प्रॉब्लम या इस तरह की प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड इसमें होती है। तो अक्सर ये न्यूज़ में आता है जो ओखला वाले के लिए कि इस प्लांट को बंद कर दिया जाए क्योंकि रेजिडेंट्स को वहां पर इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओल्ड हो चुके हैं या नए बन रहे हैं, तो वो अगर शहर से बाहर है तो ठीक है, लेकिन अगर सिटी के आसपास है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ एयर पोल्यूशन और फाउल स्मेल्स in and around these incineration. And then finally we have a compost. कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है डिस्पोजल का जिसमें आप ऑर्गेनिक फ्रैक्शन से अपने लिए क्या बना सकते हैं, यू कैन जनरेट अ मैन्योर और व्हाट वी कॉल एज कंपोस्ट। इसकी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी फर्टिलाइजर्स की होती है, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड वे टू हैव अ ऑर्गेनिक, टू डेवलप ऑर्गेनिक फॉर्म। अगर आपके पास किचन वेस्ट है या गार्डन वेस्ट है तो आप उससे अपना एक कंपोस्टेबल मटेरियल बना सकते हैं। एनपीके वैल्यू उसकी इतनी हाई नहीं होती, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपोस्टिंग प्रोसेस, हमारे खाने में क्या चीज़ है, हम लोग सॉलिड वेस्ट अगर हम देखें अपने जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो चीज़ हम खाते हैं वही हमारे वेस्ट में भी वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ प्रोटीन, we have amino acid in our food which are generated from which is a part of a protein, lipids in the form of fat, carbohydrate, cellulose and lignin which is a part of plant. So all these things are coming in our solid waste. So if we provide certain amount of oxygen, some nutrients and some microorganisms, they can convert it to a useful product that is known as compost. There will be a generation of some new cells, carbon dioxide, water and some heat is also generated because it is an exothermic reaction. तो उसमें होता क्या है कि जब ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस चल रहा होता है 10 से 15 दिन या 20 दिन तक चलता है ये प्रोसेस कंपोस्ट बनाने का, और हम क्या करते हैं बीच बीच में इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि ऑक्सीजन इसके अंदर नीचे वाले पोर्शन में जाती रहे। तो कुछ न्यू सेल्स बनेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और रिएक्शन के दौरान क्या होता है इसमें हीट जनरेट होती है। अगर आप कंपोस्ट के अंदर 10वें दिन या 15वें दिन हाथ रखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इसके अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। दैट टेम्परेचर इज ड्यू टू बेसिकली ड्यू टू द continuous process of degradation of organic fraction by microorganisms. So in the meantime they are also releasing heat energy. This composting process is affected by temperature, pH, nutrient, moisture and availability of
ऑक्सीजन। यानी ये सारी चीजें भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर टेम्परेचर आपने क्या मेंटेन किया है, पीएच क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, मॉइस्चर क्या है, और availability of oxygen. Now this graph depicts basically, I'm not going to explain the whole mechanism behind this composting process, but this is just to give you an idea that the temperature inside the compost raises to around 60 to 65 degrees centigrade. So there are two types of bacteria that are working during whole degradation process. एक mesophilic है, दूसरा हम thermophilic कहते हैं. One we call it as mesophilic bacteria, another is thermophilic microorganism, and thermophilic works at a higher temperature. That means higher temperature is also supporting certain types of bacteria or microorganisms, so that can also degrade or convert organic fraction of a solid waste into a compost. So the temperature reaches to around 50 to 60 degrees centigrade. Here you can see the compost pile diagram, in which we are not providing a direct or a turning aeration. We are just providing a bottommost portion aeration. Here you can see there is a pipe inside this compost pile, and air is blown inside this pile, or what we call as windrow. तो होता है कि जब कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है इसके अंदर कंपोस्ट के पास अंदर, तो हम कुछ टाइम के बाद इसके अंदर ऑक्सीजन, इसको हिलाने के बजाय, एजिटेट करने के बजाय, व्हाट वी डू, we just provide a oxygen inside this compost pile, and the height of this compost pile is around 4 to 8 feet. So here you can see this type of pile or windrow is known as static pile. आप इसको हिला नहीं रहे, और एरेशन कैसा है इसमें, forced aeration. For example, these are the different photographs of these type of compost pile. Here you can see we are introducing air inside these compost piles during the compost production. यहाँ देखें आप, कंपोस्ट पाइल है और उसके अंदर आप ब्लोअर से एयर को इंसर्ट करें. तो दिस टाइप ऑफ पाइल इज नोन एज स्टैटिक पाइल. मटेरियल्स रिमेन स्टैटिक, यानी जो मटेरियल सॉलिड वेस्ट का है वो रखा हुआ है. आप इसमें बार बार कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मिक्सिंग करने के बजाय ऑक्सीजन के थ्रू प्रोवाइड. इससे इसकी पीएच भी मेंटेन रहती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है. This is another photograph of a static pile. Here you can see blowers are being used for supplying oxygen inside these. Now another type of compost pile, इसमें क्या करते हैं, they are being used for agitated piles. यानी इसमें agitation को यूज करते हैं मटेरियल का मेथड के लिए, कि आप एजिटेट करते हैं with the help of some external device or mechanically agitated. That means the truck will move over this, यानी इसके ऊपर वो मूव करता रहेगा और ऊपर नीचे करता रहेगा. यहाँ पे हम ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन इनसाइड दिस कंपोस्ट पाइल बाय यूजिंग अ मिक्सिंग टेक्निक, नॉट बाय अ फोर्स एरेशन. यानी ऑक्सीजन को ब्लो डाउन नहीं करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कंटिन्यूअसली मिक्स कर रहे हैं, ओवरटर्न कर रहे हैं इसमें. So these are all about different type of composting technique. The another last one is vermicomposting. Here, as the name suggests, we are using certain types of worms to convert these type of compost. हम इसमें बहुत सारे कंपोस्ट में क्या करते हैं कि हम ला के कंपोस्टिंग प्रोसेस तो चल ही रहा है माइक्रोब के साथ. We also introduce certain types of different types of worms, and that worms also start degrading the solid waste. और ये worms स्पेशल टाइप के worms होते हैं. जनरली जो अर्थ worms हैं हमारे घर के आसपास बारिश में मिलते हैं, वो वाले worms नहीं होते. They are genetically modified or cultivated worms. Vandana ma'am, Sir, please switch off your sorry mic, to please. interrupt you again. Disturbing. Madam, Bandana madam, please mute yourself. Bandana madam, please mute yourself. Just wait, I'll call her. Just wait, I'll call her. Okay, sir, please continue, sir. Sorry. So this type of vermicomposting can be done with the help of worms, and these worms are cultivated. They are not that one that are that we found in रेनी सीजन. जो हम बरसात में अपने घर के आसपास worms, अर्थ worms होते हैं, उन worms को नहीं यूज किया जाता है इन composting. They are genetically modified or cultivated in farm, and they have trained, you can say trained in such a manner that
they eat up the solid waste very fast. For example, if they are having a 5-gram weight, they can eat 15 grams or 10 grams or 20 grams of solid waste in a day. और in the meantime, they are excreting. तो जो एक्सक्रीटा जनरेट हो रहा है वो भी सॉलिड फॉर्म के फॉर्म में है, और जो वो च्यू कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट को, उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है, सॉलिड वेस्ट को स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो रहा है, और उनके मूवमेंट की वजह से सॉलिड वेस्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई भी मेंटेन हो रही है। तो ये बॉम्ब्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, ये मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं, यानी जो फार्मर्स हैं उनको सोल्ड आउट करते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। कंपोस्टिंग इज एन एरोबिक प्रोसेस, लेकिन साथ में अगर हम इसमें वॉर्म्स को ऐड कर दें, दैट वी कॉल इट एज वर्मी कंपोस्ट। So this is all about the whole. I have tried to complete the whole solid waste management in 1 hour. It is a huge topic, but if you want to know more about this municipal solid waste, you can download this manual. This is freely available on the Ministry of Urban Development website. It is developed by Ministry of Urban Development in 2016, and this is a manual for solid waste management for municipal case, and it is a part of a Swachh Bharat mission, which is started by the government of India. So this rule book, or what we can say, is developed in 2016, and till date some amendments are being done in this manual, but still this is being followed, and this is a very good manual. You can download, freely available on the Ministry of Urban Development, and where different types of rules are being given, so from where you can have a look. I will share all remaining slides where I have put certain rules that are very important, and the committee that comprises the monitoring of the solid waste management for preparing this manual or for the guidelines or for managing, which includes Ministry of Urban Development, Ministry of Rural Development, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Ministry of Agriculture, Central Pollution Control Board, pollution control boards of different state, urban development, some ULBs also are there, Federation of Chambers and Commerce and Industry persons are there, and 2 subject experts. So the committee will meet once in a year as per their guidelines to monitor the implementation of these. So thank you. If you have any question, you can ask. Thank you, sir. Sir, I have a question. Can I ask? Thank you, sir. Thank you so much. Sir, thank you, sir. Sir, one question. Hello. Thank you, sir. Sir, I have a question. Thank you, sir. Hello. One by one you can ask. Sir. Sir, myself Dr. Shashank Pramanik from West Bengal. थैंक यू सर। हाँ, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था। मेरा क्वेश्चन ये है, जी जो है वर्मी कंपोस्ट आपने बताया, जी जी तो उसमें वो जो सॉइल को फर्टिलाइज करता है, इसमें कि सिर्फ अर्थवर्म का ही रोल रहता है या फिर उसमें गांठ में जो बैक्टीरिया रहती है या उसमें जो पैरासाइट रहती है? बैक्टीरिया का भी रोल है, और बैक्टीरिया हम अक्सर काउडंग के फॉर्म में उसमें मिक्स करते हैं। काउडंग अगर हम मिक्स कर देंगे तो उसके अंदर से जो नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो उसके अंदर ग्रो करते हैं। और जो उसके अंदर जो मोनोसिस्टिस पैरासाइट होता है ना, कि वो क्या कोई रोल प्ले करता है या फिर उसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर? सिर्फ पैरासाइट्स का भी रोल है, फंगाई का भी रोल है इसमें, और बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स हैं उनका भी रोल है इसके अंदर। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन इतना ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन दे ऑल इन कंबाइंड दे वर्क टुगेदर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, one question. Yes, please. Good morning, sir. Good morning. Sir, very informative session. सर, हम ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जैसे आपने इसमें भी बताया कि जो सॉलिड वेस्ट होता है, तो हम जब टेम्परेचर को बहुत हाईएस्ट कर देते हैं, तो हम चाहते हैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखते हैं, मींस तो नहीं, टेम्परेचर हम नहीं ज्यादा रखते हैं। ये इसमें रिएक्शन ऐसा होने लगता है कंपोस्ट में कि वो टेम्परेचर अपने आप हाई होने लगता है। रिएक्शन इस तरह का होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। कंपोस्ट की बात कर रही है, इंसिनरेशन की आपने? नो सर, हम सॉलिड वेस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंसिनरेशन। जी, तो उसमें सर जब टेम्परेचर बहुत हाई है, तो जैसे अभी आपने कहा कि कंबस्जन फुली होना चाहिए और चाहते हैं हो जाए, तो सर जब कंबस्जन इतना ज्यादा होगा तो क्या इससे और पोल्यूशन नहीं इंक्रीज होगा? ये होगा पोल्यूशन रिलीज, गैसेस के फॉर्म में।
जी जी, मैंने कहा, आपसे बताया भी मैंने कि हमें कंट्रोल डिवाइस वहाँ पे लगाने पड़ेंगे एयर पोल्यूशन के। और अगर नहीं लगाएंगे आप तो ये एनवायरनमेंट को और ज़्यादा पोल्यूट करेगा। जी तो सर, यही इंडिया में मेरा इसीलिए क्वेश्चन था। इंसिनरेशन प्लांट्स अभी बहुत कम है। ओके ओके सर, और एक थैंक यू एग्जांपल सर। मैं देना चाहूँगा। जी जी सर। स्वीडन में या नॉर्वे में, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इनमें क्या होता है कि इनकी पॉपुलेशन तो कम है लेकिन साल भर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। तो उनको अपने जो घर है उनको गर्म रखने के लिए हीटिंग डिवाइसेस चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि इतना अच्छा उनका सिस्टम है कि वो इंसिनरेशन प्लांट से जो हीट जनरेट होती है वो लोकल हाउसेज में को हीट करने में इस्तेमाल करते हैं। और उनका कंट्रोल सिस्टम एयर पोल्यूशन का इतना स्ट्रांग है कि जीरो पोल्यूशन होता है उनके इंसिनरेशन प्लांट। दूसरा, सब पोल्यूशन छोटा कंट्री होने की वजह से उनका सॉलिड वेस्ट का जनरेशन भी बहुत कम है। तो क्या करते हैं कि वो आसपास के कंट्रीज से सॉलिड वेस्ट को खरीदते हैं अपने इंसिनरेशन प्लांट को चलाने के लिए। अच्छा, इंडिया में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट वो इतना कंबस्टेबल भी नहीं है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ जो अगर आप सॉलिड वेस्ट में देखें तो हम ज़्यादातर वेस्ट अपना जो है एक लोकल कबाड़ी वाले को या एक रिसाइकलर को बेच चुके होते हैं। तो उसके अंदर उतना फ्रैक्शन सॉलिड वेस्ट में कंबस्टिबल मटेरियल का नहीं होता अगर हम इंसिनरेशन प्लांट पे। और जब इंसिनरेशन प्लांट पे कंबस्टिबल मटेरियल पहुंचेगा ही नहीं तो हम उसमें से जो है हीट एनर्जी भी नहीं जनरेट कर सकते। ये सर एक वन क्वेश्चन सर, जैसा आपने कहा कि यूएसए में जो लैंडफिल हम सॉलिड वेस्ट की बनाते हैं तो जी। उसको हम फिर कवर कर लेते हैं, अब वो लैंडफिल दोबारा यूज नहीं हो पाती है। तो जी। अगर इस तरह से हम लैंडफिल बनाते जाएंगे तो क्या शॉर्टेज ऑफ लैंड नहीं हो जाएगी? ये हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है। आप अपने आसपास भी पता करिए कि आपका सॉलिड वेस्ट, जिस शहर में आप रहते हो, कि आपका सॉलिड वेस्ट जा कहाँ रहा है, तब आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं वो लैंड पे ही कहीं डंप हो रहा होगा। शॉर्टेज ऑफ लैंड, ये हम इसको वही मैंने कहा, हम जनरेशन थोड़ा कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते सॉलिड। इतना पैकेजिंग मटेरियल है, इतना घरों से हमारे सॉलिड वेस्ट निकल रहा है। आजकल हर चीज़ हम ऑनलाइन बाय करते हैं, साथ में उसके सॉलिड वेस्ट आता है और वो हम अल्टीमेटली डंप कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंचता है। तो आप अगर पता करेंगे अपने शहर में तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं एक लैंडफिल बना हुआ होगा। अगर प्रॉपर लैंडफिल नहीं होगा तो डंपिंग साइट तो ज़रूर होगी जो लैंड को, और वो लैंड कभी रिक्लेम नहीं हो पाएगा, यानी दोबारा वो इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ना यूज़ हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इस टेक्निक पे। तो मतलब वेस्टेज ऑफ वेस्ट भी हो जाएगा सर, लैंड एक तरीके से लैंड आपका वेस्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए हो जाएगा। हाँ वो सर हमेशा के लिए हो जाएगा। सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं और हो सकता क्या? इसका सोल्यूशन यही है कि प्रॉपरली आप मैनेज करें, कम रिड्यूस करें। बहुत सारे, मतलब अगर देखा जाए कि हम पॉइंट्स बनाएं इस तरह की कि हम जनरेशन कर दें, कम करें। हम 0.5 किलोग्राम पर पर्सन पर डे है, मैंने बताया आधा किलो पर पर्सन पर डे है। तो आप अपने घर में अगर लगाइए तो आपका अगर 5 लोग हैं तो कितना वेस्ट एक दिन में जनरेट हो रहा है, और आप सिटी का पूरा निकाल सकते हैं। तो वो 0.5 कम करने की कोशिश करनी है। और जैसे जैसे सिटी की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली या कोलकाता की बात करूं तो ये 0.5 नहीं होगा, ये 1 के आसपास होगा, 1 किलोग्राम पर पर्सन पर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर माई सेल्फ डॉक्टर डेजी फ्रॉम गांधी कॉलेज रायबरेली सर। सर आपका लेक्चर बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही अच्छा था सर। मेरा एक क्वेश्चन है ये सर, क्या हम लोग घर पे ये कंपोस्टिंग सिस्टम कर सकते हैं क्या? शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास लैंड अवेलेबल है थोड़ा सा, या किचन गार्डन है आपके पास। लैंड जैसे मान लीजिए गार्डन नहीं है, उसके अलावा क्या कोई और मेथड भी है कि जिससे हम थोड़ा सा ही सही लेकिन डेली का कुछ कर सकते हैं? आप बॉक्स बना के कर सकती हैं। कोई बॉक्स बना लें छत पर, उसमें जो है मिक्स करें, और इस तरह से आप थोड़ा सा लीव्स भी, ड्राई लीव्स और ये नेचुरल वेस्ट ये लेके करें जो आपके घर से निकल रहा है, और उसको कुछ टाइम के लिए रखें। तो आप अपने लोकल जो गमले हैं जो घर में है उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर, अभी जैसा आपने लैंडफिल का पिक्चर दिखाया उस पर हम सोलर पैनल लगा कर उसको यूज कर सकते हैं। फिर मैंने देखा सर उस पर आपने दिखाया कि उस पर एग्रीकल्चर टाइप का, मतलब कुछ क्रॉप वगैरह भी जमाए गए। मैंने क्रॉप के लिए मना किया, मैंने क्रॉप नहीं लगा सकते, मैंने कहा सिर्फ ऐसी हल्का सा ग्रास लगा सकते हैं, क्योंकि क्रॉप लगाने में चांसेस ये हैं कि प्लांट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जितना भी जो सॉइल में अवेलेबल होगा वो प्लांट्स की लीव्स में आएगा। तो हम एग्रीकल्चरल लैंड तो नहीं बना सकते उसे।
क्योंकि प्लांट्स के साथ आपने सुना होगा कि आजकल जो ड्रेन से फार्मिंग कर रहे हैं, यानी ड्रेन वाटर को लेके फार्मिंग करते हैं, तो वो सारी इम्प्योरिटीज ड्रेन की जो है वो प्लांट्स की लीव्स में आती। प्लांट्स कैन अपटेक पॉल्यूटेंट। प्लांट्स के साथ बहुत खास बात है कि जो उसकी सॉइल में होगा या जो उसके वाटर में होगा वो उसकी लीव्स में भी होगा, तो इसलिए नहीं कर सकते। थैंक यू। थैंक यू। Sir, I have a question. I am Amit Kumar Mishra from Prayagraj. I am from the discipline of philosophy. My question is that is there any appellate authority where we can complain about the collection of waste in civil areas? आप अपने लोकल नगर निगम या नगर पालिका या जो है उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं उसको। आपका तो बड़ा प्रयागराज तो बड़ा शहर है, तो मेरे ख्याल से उसमें इस तरह का कोई नंबर होगा या कुछ इस तरह का जहाँ पर आप कर सकते हैं, या लोकल सर्वे जब होते हैं तो उसमें आप अपना वो बता सकते हैं। अक्सर जो है लोकल सर्वे स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है कुछ टाइम के बाद वो होते हैं, सर्वेज होते हैं रैंकिंग के लिए सिटी के, तो उस टाइम आप अपना ओपिनियन या अपने सजेशंस दे सकते हैं। Why we are not going to ban the throwing of garbages in the roads or streets? It is also an important question, even if we know that it is very harmful. Very important thing, because implementation of rule is also important. मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, आप समझा रहा हूँ सारी चीजें, लेकिन जब तक हम अपने रूल्स के बारे में नहीं जानेंगे, और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन हमारा और सबका भी पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर, बहुत ही अच्छा आपने बताया। लेकिन अभी मैंने पढ़ा ये इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसका जो फेज 2 है उसमें गति शक्ति अभियान की लॉन्च किया गया है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कि सर इसमें क्या मतलब रखा गया है, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं? मेन अभी बायोगैस पे लाना चाहते हैं कि एनर्जी रिकवरी भी हो सॉलिड वेस्ट में, मैनेज करके उसके अंदर गैस से हम कुछ रिकवर करें और कुछ फ्यूल टाइप की चीज हम जनरेट करें, उस पे अब बहुत काम हो रहा है। सर क्या ये हाईवे और इसमें जो है यूज किया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट? बहुत कुछ रिसर्च तो है कि उन्होंने क्या किया है कि कंक्रीट के साथ कुछ प्लास्टिक्स को मिक्स करके रोड्स बनाई हैं, लेकिन वो अभी बहुत ज्यादा हर एरिया में तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह वो रिसर्च बेस पे है कि हम प्लास्टिक को कंक्रीट के साथ या कुछ एड मिक्सचर्स के साथ या कुछ ऐसा बनाए मटेरियल, ताकि वो रोड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सके। तो कुछ काम तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर अभी सक्सेसफुल नहीं है। जी सर, क्या ये मतलब पॉल्यूशन इस जो है नहीं होगा क्या सर इससे, जब जो है हाईवे में और इसमें यूज किया जाएगा? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट जो इस टाइम मार्केट में या हमारे आसपास है वो पॉलीथिन या पॉली बैग्स ही है। सॉलिड वेस्ट का सबसे खतरनाक तो सभी किया जाएगा ना उसमें, यूज तो सभी किया जाएगा पूरा वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें हम जब तक इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तब तक नहीं हो पाएगा। हम भी चाहते हैं कहीं पर, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि एक बैग दे दीजिए, हमें सामान रखना है और हम आज लेके नहीं आए। तो अगर सारे, मैंने कहा ना, इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तरह की जागरूकता बहुत जरूरी है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, thank you. Can I? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. मिलन मंडोल सर है? मिलन मंडोल सर है? Left the group.
लॉग आउट कर लें?